हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एक स्टूडेंट है। वो आपको बताएंगे कि आखिर ये है यूनिवर्सिटी कि है कैसी। बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन भी करेंगे और आपको ना सारे वो प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। वुल्फ यूनिवर्सिटीज की डिग्री से लेकर इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, स्टार्टअप कैसे आप अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से, कोडिंग कल्चर आखिर रहता कैसा है। तो इन सब के बारे में ना इस वीडियो में बात होगी। और जिस किसी को भी ना इसका फॉर्म फिल कर रहा है, क्योंकि यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इनका फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को जाकर फिल आउट कर सकते हो। 17 जून इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको कूपन कोड मिल जाएगा। 1000 का फॉर्म है, आपको 500 का पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि ना यार, जिस किसी को भी इस यूनिवर्सिटी में इनरोल करना है वो इस फॉर्म को जरूर फिल आउट करे। क्योंकि इससे ना इसके बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा। उस वो क्वालिफाई टेस्ट होगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ना मैं यार बता दूं, स्केलर एकेडमी का ना एवरेज पैकेज ना 18 लाख तक का गया था। और ना अभी जो नया बैच चल रहा है उसका 10 to 12 लाख तक जाएगा। तो मेक श्योर करना, अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हो ना, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल करना। अब वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ स्केलर इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट है। उनसे बात करेंगे कि आखिर स्केलर इंस्टीट्यूट आखिर है कैसा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? Sure. Hey everyone, I am Shreyas Dutt. I'm from Ghaziabad in Delhi NCR, and I completed my schooling in 2022. Took a drop year to prepare for JE, और उसके बाद happened to join Scale School of Technology, and I am now here, a first year student for computer science. ओके। तो आपके पास तो काफी ऑप्शंस रहे होंगे स्केलर के अलावा भी। तो ऑप्शंस के बारे में बता Definitely, सकते हो? हाँ। sure, yes. Uh, if we talk about Indian universities, so I was getting almost all tier two private universities and colleges like that of VIT, Manipal, Shivnagar, JP, all being pretty near to my house as well. Some Noida mein the. And I was also getting stuff like Newton School of Technology, which is pretty similar to Scalar School of Technology, getting a 50% scholarship there. And apart from all the private universities in India, I also applied to American universities. So American universities, I applied to approximately 10 of them. I got into all 10 of them. Some of the topmost being University of Texas in Austin, Penn State, Northeastern, and just to name a few. Yeah. मैं आस्क वन थिंग, लाइक आपको कौन सी ऐसी चीज थी जो मोटिवेट कर रही थी कि लाइक आपको स्केलर की ओर जाना है, स्केलर्स में इंस्टीट्यूट में Um, पार्टिसिपेट करना है? right. So, iski actually the story begins from that my father, he is a software engineer. He is in the industry. He does what we are trying to do after 4 years. जब उन्होंने करिकुलम देखा, when he saw the entire approach of how हमारी जो फैकल्टी है, of जो भी कुछ हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके से कॉलेजेस में 4 सालों में भी नहीं पढ़ाया जाता है जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. So that was a major push for me, I would say, for my father believing in the curriculum. And now that I'm here, I too believe in it. Yes. आप मुझे ये बता दो, यहाँ पर फैसिलिटीज कैसी है जो आपको प्रोवाइड होती है, और यहाँ पर आपकी लाइक आपका हॉस्टल कैसा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है स्केलर में आपको मतलब कि हॉस्टल्स में ही रहना होता है। तो वो That is कैसे? true. Hostel is pretty amazing, to be honest. I love my hostel. पूरे दिन किसी ना किसी के रूम में जाके you can have fun, you can chit chat, you can solve questions together. So you get. So what I've done is मैंने एक double sharing room लिया. So हम्म। my roommate and me share this room. We have a joint washroom, हम्म। and on the fifth floor we get our mess, जिसमें सब lunch, dinner, breakfast. And the main campus, that is the macro campus. So this hostel is called the micro campus, and the main campus is called the macro campus. वहां तक जाने के लिए सुबह हमारी शटल आती है, बस सर्विस है फ्रॉम स्केलर इटसेल्फ. वो हमें वहां तक लेके जाती है और वी कैन वॉक. आई यूजुअली प्रेफर वॉकिंग. बैंगलोर मौसम, सो व्हाई नॉट. And yeah, that's it. Abhi in our macro campus, we have got a new innovation lab. Looks very sci-fi. Looks very cool. We are creating great stuff over there. We've also got a new turf for football, cricket, badminton. I'm quite a badminton player myself. Thought about being a district player, etc., etc. So loving all the new changes. Got a new mess in the macro campus as well. So yeah, Scalar from
where I came in 1 year ago, I believe the campus has grown a lot. एग्जैक्टली सो द सेकंड क्वेश्चन इज लाइक कि आपका ना यहाँ पर जो स्केलर है वो बिट्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या है वो ब्रीफली कैन यू से कि इतना क्या क्या होता है मतलब Sure. इसमें बिट्स में या So degree was, I believe, one of my mother's very concerns. It's an online BSc degree from bits, right? But then again, my father being a software engineer, being in the industry, he told कि degree से कुछ फायदा नहीं है if you don't really have the skills. And if you were to talk about the education part of that we have to cater to, जो bits पिलाने की हमें ताकि degree मिले, कोर्सेरा के थ्रू दैट इज मोस्टली कवर्ड इन द क्लास. जैसे अभी हमारा जो ये वाला ट्राइमेस्टर चल रहा है बिट्स का, वी हैव कमांड लाइन इंटरफेसेस, वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स, जो हम ऑलरेडी अपने पिछले ट्राइमेस्टर में कर चुके हैं. सो एग्जैक्टली इट्स प्रीटी स्ट्रीमलाइन. और अगर कोई नया टॉपिक भी है सो इट गेट्स कवर्ड इन 1 or 2 weeks. इट्स प्रीटी इजी फॉर अस. okay and what about the faculty like what about the seniors how's their behavior towards you like कैसा behavior है उनका Right. So the faculty is, I believe, the best part of my college. My teachers, they're all. I didn't expect like I usually expect professors to be old age people who would come teach and go. yeah But यहाँ पर वो नहीं था. These people were coming from industry, coming from Facebook, Snapdeal. After doing thorough years of work in the industry and giving us that very knowledge. I There is this culture of BSMs, that is batch success managers here. So we don't really have seniors since हम लोग पहला batch है. So BSMs are almost like teachers for us. They stay with us in the hostels. मेरे पड़ोस के rooms में we have BSMs. We can approach them at any hour. We can ask them any questions. They help us by being our seniors in a way and also our teachers. So pretty cool, yeah. so they are like more like mentor type I guess they Definitely, are yes. guiding they are Uh, guiding you okay so what about the sports Totally. and what about the cultural activities like events and all Cultural में we have clubs. I was a part of the TED Talk tribe, and we have the cultural club as well. So cultural club keeps on doing a lot of stuff. We have all the basic celebrations: Georgia Day, Republic Day, Independence Day. Otherwise, we also have stuff like sketching competition in Mahashivratri. I happened to be the first runner-up in that, so remember that. Otherwise, sports के लिए there was one. We have houses. I'm in the Phoenix house. There are 4 houses: Phoenix, Leo, Kong, and Tusker. So inter-house competitions होते रहते हैं, and we get points. We fight for our houses. Recently there was a football match. Again, Phoenix won. Phoenix is the best house here. So yeah, cultural and sports activities keep on happening. The clubs are responsible for it, and also the management takes a special role in it. We have teachers who take over the clubs and mentor them on how to do stuff for all of us. and what about the like ये वॉल्फ यूनिवर्सिटीज का क्या लाइक जो इंग्लैंड में उसका क्या कॉन्सेप्ट है उससे क्या मतलब हेल्प मिलता है आपको Right. So, जो Wolf University है, that is, I believe, England based, right? yeah And we get a master's degree from there. So, if I were to, let's say, apply for my another master's degree, let's say, in the US, for an MBA in Harvard or anything of sort, so you get special points since you're a dual degree holder. You get more preference. And since it's a dual degree program in 4 years, that people usually get one degree, that is a BTech. So you do have an edge over others in certain aspects when it comes to you know getting into universities in the foreign, and also it does not cause any hindrance for you अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है, be it CAT or any sorts. ओके एंड व्हाट अबाउट लाइक कि आपका ये जो यूनिवर्सिटी है स्केलर ये बाकी यूनिवर्सिटीज के करिकुलम से कैसे अलग है
What main things like do you feel like यहाँ पर मुझे ज्यादा एक्सप्लोजर लाइक एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली है इस कंपैरिजन टू बाकी यूनिवर्सिटीज के? Yeah. Scalar में, I would say, traditional colleges. A lot of my friends are in IITs, in IIT Delhi, IIT Bombay. Exactly. So I keep हम्म. hearing from them कि first year में जो उन्होंने पूरा करा है, that is physics, chemistry and maths. Whereas Scalar में physics, chemistry का concept ही नहीं है. From the day one you enter, you are with your laptop in your hands and you start coding. They start with Java. You are then plunging into Python. You're going into backend development. You're going into web dev. You're doing data structures. Then you're doing also linear algebra that is essential for artificial intelligence. So Scalar is, I would say, very industry focused. They know what the tech industry wants and they curate it for you. जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज आई वुड से आर बाउंड टू सर्टेन रूल्स दैट दे हैव from the Indian university's perspective. That is why the curriculum is pretty outdated of sorts. Maybe not IITs right now, Exactly. but other colleges in India. So yeah, otherwise, if projects, if I were to talk about, abhi tak, I have created my own image editor in Java. You can put in an image, you can change all the aspects of it, like saturation, contrast, etc., etc. We have done a few web dev hackathons and created our own React.js portfolios and currently working on one project that is totally React.js based, but it has to be something like of my own startup. That is my assignment, that I have to create my own startup as a website using React.js. So that I believe is just a big throw of light of how Scalar even assignments are very different from your traditional colleges they can. So we can say like from starting you are only focusing on like coding and all. बट डिफरेंस ये हो जाता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है आपको कोडिंग सेकेंड ईयर से ज्यादा फोकस करा जाता है उसमें सेकेंड थर्ड ईयर से. सो मेनली कोडिंग पे ज्यादा आपको फोकस होता है. तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि अभी वर्थ इट है अगर जो भी बच्चा इसमें लेना चाहता है एनरोल करना चाहता है सो उनके लिए वर्थ इट होगा ये? इज इट वर्थ इट? Definitely, as someone who is sitting in Scalar and hoping for the best, I would say it is 101% worth it. Go for it. At least, I would say, you know, attempt the test, see if you're meant for it. Because test is pretty easy, to be honest. The NSET exam. Uh, People can connect to me over LinkedIn as well at Shreyas Garg. They can ask me about the test, etc. And one of the biggest plus points that I forgot to talk about is the 1 year internship they have here in the second year. So after 1.5 years or 2 years of learning, you get 1 year internship that can itself be counted as work experience. And I've heard of no college giving 1 year internship. I was recently in IIT Mandi. I was meeting a few friends. I was staying there, and everyone was flabbergasted to know कि मैं 1 साल की internship करने वाला हूँ अगले 6 महीने बाद. So that is big plus, yeah. आई थिंक whoever इज लिसनिंग दिस तो उनके लिए ना प्लस पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. और जिन किसी को भी यार एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर एनरोल कर सकते हो उसमें कूपन कोड अप्लाई करके. इनमें एक टेस्ट भी होता है गैस एनरोल करने के बाद आपका एक टेस्ट होता है जो आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होता है आई गेस. अच्छा. मुझे अब ये बता दो कि यहाँ पर प्रोस क्या क्या आपको जो फील हुए कि ज्यादा यहाँ पर मतलब कि उसमें फोकस करा जाता है जो एक दो चीजें चीज बता दो आप जो प्लस पॉइंट है यहाँ पर. आई वुड से एक तो न्यू टेक्नोलॉजी पे हम बहुत जल्दी वी कैन अडेप्ट एज हम्म. compared to traditional colleges. So I believe a lot of people would know about Vision Pro. अभी Apple ने निकाला था. We have हम्म. that back in our innovation lab. We are working on a project for urban company for it. We have the Meta Quest 3. We are working on VR AR projects. I don't think so any university is doing that at such an early stage. Some of my friends, they are building a drone in their drone lab, a drone that can maybe extinguish fires, detect fires, and we have crazy stuff going on here. So I believe someone who is very enthusiastic about tech, जिसको जो है technology के लिए passion है, तो Scalar is the place to be.
ओके, थैंक यू सो मच श्रेयस। और वीडियो में जो भी ये मतलब कि सारे स्टूडेंट बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जिस किसी को भी एनरोल करना है, मैंने पहले यार आपको बता दिया था, वी हैव अ फॉर्म, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्म को चेकआउट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, आपका फिर टेस्ट होगा। और ना आपने इतना वैल्यूएबल अपना जो समय था वो निकालने के लिए थैंक यू सो मच श्रेयस। आपने जो जो पॉइंट बताया वो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट थे कि हाँ, जो भी बच्चा इसमें एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि काफी दिनों से ना हमसे बच्चे पूछ रहे थे कि न्यूटन भी था उनके पास, इसके मतलब कि काफी और भी यूनिवर्सिटीज थी, तो उनसे वो कंपैरिजन कर रहे थे स्केलर का। तो उनको अब सारे पॉइंट्स मिल चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. Thank you.